Good morning, students. Today, I am taking the lecture number 3 of the deflection of beam. And in my third lecture, I am just taking the simply supported beam. जो मेरा second lecture था, in that I have discussed about the cantilever beam when it is having the point load, when it is having the uniformly distributed load and uniformly bearing load, right? So in this lecture, I will drive the formula, or I will solve the way that how we will solve the problems in the simply supported beam by using the double integration method. तो जो आपकी कैंटिलीवर बीम थी, जहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन मेथड. एंड इन द डबल इंटीग्रेशन मेथड इसी कड़ी में जो मेरा लेक्चर होगा, या आपका थर्ड लेक्चर होगा. और लेक्चर क्या है मेरा? सो सिंपली supported beam with the point load acting on the center of the beam. That is, so you can say this is a symmetrical simply supported beam. और पॉइंट लोड जो है सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा कि वहां पे जो लोड है आपका वो सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा. तो सो दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और यू कैन से द सिमेट्रिकल सिंपली सपोर्टेड बीम. तो इसका हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप, हाउ वी कैन कैलकुलेट, तो इसके बारे में हम आज इसका डेरिवेशंस करते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट? So you can say this is my lecture number 3. तो lecture number 3 आपका है, राइट? आप क्या कीजिए, suppose this is your simply supported beam like this. आप सिंगल ही डाल दीजिए. So this is your simply supported beam, right? This point is A, this point is C, and the load is acting, and you can say this point is C. That's this point. You can say C is here. So this point is C, where the load is acting. That is W. इसको आप B रख लीजिए, right? So this point is B. So this is my problem today, that is simply supported beam having the point load which is acting at the center of the beam AB. And what is our objective here? Our objective is to calculate the maximum deflection and the maximum slope. This we have to find out that मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका कहाँ होगा और मैक्सिमम स्लोप जो होगी वो इसकी कहाँ होगी, राइट? सो व्हेन द लोड इज एक्टिंग लाइक दिस, यू कैन से दैट द बीम इज डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, राइट? तो बीम जो है वो इसी तरीके से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी.
तो जहां पे एक रिएक्शन फोर्स, जहां पे मैं कहता हूं कि दिस इज वन रिएक्शन फोर्स आर ए एट दिस पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू आर बी. So these are the two reaction forces which are acting at point A and at point B, and the load is acting. तो जहां से लेके जहां तक इसकी आप लेंथ आपका इसकी आप कितनी ले लो आप, तो दिस लेंथ इज L. तो इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट से लेंथ होगी आपकी, दिस इज L/2 and this is also equal to L/2 because the load is acting in the center of the beam. So the length is L/2 here and L/2 here. This is our simply supported beam. तो हमने क्या किया, एक simply supported beam थी, the point load is acting at the middle of this and we have to find out that the maximum slope and the maximum deflection. So for calculating the maximum slope and the maximum deflection, first we have to find out that the slope and the deflection at any section of the beam. किसी एक बीम की एक सेक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, स्लोप को फाइंड आउट करेंगे और साथ में उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सपोज दिस इज योर सेक्शन. आप एक सेक्शन ले लीजिए एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट, सो दिस इज सेक्शन xx. तो जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस होगा, यू टेक ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट v. यू अंडरस्टैंड दिस? तो आप यू कैन टेक दैट सेक्शन. तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट लूं, सो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन क्या होगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट mx. व्हाट इज योर बेंडिंग मोमेंट mx? तो ये अपना जो फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट mx निकालने के लिए हमें क्या होगा, इसका rv इंटू x, rv इंटू x, बिकॉज x इज द डिस्टेंस फ्रॉम the point v to the section x. We have taken the distance x from here, or you can say we have taken the section at a distance x from the point v. So bending moment is mb rb into x. You understand this? हम section आपकी इधर भी ले सकते हैं. We can take the section from A also. We can take the, because this is a point load, we can take the section from A also, and we can get the boundary. We need the two boundary conditions which we can get at the point A as well as at the, or you can say we can get the two boundary condition at point A and at point C, whereas, or you can say two boundary condition at point B and at point C. You understand? तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट, तो सबसे पहले हमें इनका रिएक्शंस निकालना होगा. हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द रिएक्शंस? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू फाइंड द रिएक्शन, to find the reaction force RA and RV. So this is a symmetrical, simply supported beam, and from the geometry of the beam you can say RA आपका क्या आएगा, अगर आपका ये लोड जो है, this is W है and this is a simply supported beam, so it means RA and RV, these are the two opposing forces which are acting in the opposite direction, that is in the upward direction. तो इसमें by from the geometry of a figure you can say R is equal to W/2, R is equal to W/2 and RV also equal to W/2. So these are the reaction forces in case of the simply supported beam which you have calculated. Now bending moment क्या आएगा,
Because why we want to calculate the bending moment? Because when we use the equation of the डबल इंटीग्रेशन मेथड की जो इक्वेशन है हमारी, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन इसमें क्या है आपकी इक्वेशन इन द डबल इंटीग्रेशन मेथड? व्हाट इज द इक्वेशन? दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम. दिस इज द इक्वेशन, right? So this is the equation in the double integration method, e I d square y into dx square, this is equal to m. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले we need the value of m in terms of x. हमें जो m की वैल्यू है वो in terms of x चाहिए. तो m की वैल्यू in terms of x क्या होगी? जब बेंडिंग मोमेंट मैंने लिखा this is rb into x, तो rb की वैल्यू है w/2, आप लिख सकते हैं w/2 into x. This is the bending moment at point x, at the section xx. You can say this is the bending moment at the section xx, w/2 into x. You understand this? जहां तक ठीक है. अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि we have to substitute the value of bending moment in this equation. आप क्या करेंगे? इसकी वैल्यू m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. सो देयरफॉर तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू w/2 इंटू एक्स, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन. अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें स्लोप फाइंड आउट करना है at the section xx. Here I am finding the slope. तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. सो फॉर फाइंडिंग द स्लोप हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट इंटीग्रेट. क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट. इंटीग्रेट द इक्वेशन. आप क्या करें? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें. तो इंटीग्रेट करके आपकी इक्वेशन क्या आएगी? ये आपका आ गया ई आई, आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, बिकॉज ई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. दिस इज द जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज दिस इज a beam of a single material. So you can say young models of elasticity, that is constant here. I is the moment of inertia and I is also a constant quantity. I is also constant of this beam AB. So we can take it out और जो हमारे पास अंदर आएगा, this is d square y upon dx square. This is equal to wy2 into x. You understand this? ये हमारा इंटीग्रेशन आया. तो इसमें therefore ei dy upon dx, this is equal to wy2 constant बाहर ले लीजिए because we are doing the integration with respect to x. तो ये आपका आ गया x square by 2, right? Or you can say ei dy upon plus c1. Plus c1. c1 is the constant of integration because this is the indefinite integration, indefinite integral. So here we will use the value, we will take the value of c1. So ei dy upon dx, this is equal to wy2 into x square by 2 plus c1, right? So this is your equation. ये आपकी इक्वेशन आ गई है. This is your equation. अब हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do? We have to calculate the value of C1. हमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या करना है? कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर हम इसको देखें, हम
simply supported beam है, and if I will draw the tangent here at this point, right? So you can say the tangent at point C, this is equal to 0. ये टेंजेंट क्या हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये हुआ dy अपॉन dx एट पॉइंट C, दिस इज इक्वल टू 0. और dy अपॉन dx एट पॉइंट C 0 कब आएगा? when we will take the value x is equal to L/2. अगर हम x को L/2 लेते हैं, so you can say, तो at x is equal to L/2 अगर हम लेंगे तो dy dx अब आपका क्या आएगा? dy dx is equal to 0. You understand this? dy upon dx, this is equal to 0 when we will take the value of x is equal to L/2. So this is the boundary condition. इसके केस में बाउंड्री कंडीशन क्या लेंगे? क्या होगी बाउंड्री कंडीशन? when x is equal to L/2, your dy upon dx, this is equal to 0. Because this is a symmetrical loading here, simply supported beam, and in this case, in the middle of this, you can say at L/2, the slope of the beam is equal to 0. dy upon dx of the beam is equal to 0. तो जहां पे आप क्या करें, ये जो इक्वेशन है, जहां पे dy अपॉन, इसको मिटा देते हैं, तो यूज बाउंड्री कंडीशन कौन सी किया हमने? x इज इक्वल टू L/2 dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू L/2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. This is the boundary condition I have taken. So substitute, just suppose करो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, इसमें आप बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो. Therefore EI dy अपॉन dx क्या है? 0 हो गया. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 कब? जब x इज इक्वल टू L/2 होगा. तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया सारा. दिस इज इक्वल टू W/2 इंटू x की जगह क्या है? L²/2 प्लस C1. Therefore C1 is equal to WL²/4 माइनस, राइट? तो C1 की वैल्यू आई माइनस WL²/4. यू अंडरस्टैंड दिस? नॉट x is equal to, sorry, दिस इज WL/2. x क्या है? L/2. x इज इक्वल टू L/2. तो ये होगा L/2 का स्क्वायर इंटू 2, राइट, प्लस C1. Therefore 0 is equal to Therefore 0 is equal to WL² 8 16 प्लस C1
Therefore, C1 is equal to minus WL square by 16. So this is the value of C1. Substitute the value of C1 in this equation. So equation number first. So you can say substitute the value of C1 in equation first. तो इक्वेशन फर्स्ट में C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. So therefore EI on dy upon dx, this is equal to W by 2 into S square by 2 minus WL square by 16 or EI dy upon dx is equal to Wx square by 4 minus WL square by 16. So this is your equation of the slope at any section. At any section, ये आपकी इक्वेशन ऑफ द स्लोप आ गया. यू अंडरस्टैंड दिस. से आप इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए. राइट. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. इसको बता दीजिए आप. So this is the equation of the slope at any section of the beam. ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया, जिस स्लोप की इक्वेशन है, that is at any section of the beam. But what we have to find out, we have to find out the maximum slope. So we have to find out the मैक्सिमम स्लोप. पहले हम स्लोप ही निकाल लेते हैं. सो हमें मैक्सिमम स्लोप मीन्स डी बाई अपॉन डी एक्स मैक्सिमम निकालना. राइट. डी बाई अपॉन डी एक्स हमें मैक्सिमम निकालना है. तो डी बाई हमें डी एक्स मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? देखिए, स्लोप हमें मैक्सिमम जहां तो इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए. स्लोप जो हमें होगी, ये मैक्सिमम हमें इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा स्लोप, और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मिलेगा एट पॉइंट बी. So you will get the maximum slope. So at point B, because we have taken the value of x from the B, so I will say I will take from point B. So maximum slope at point B. Maximum slope at point B कितना होगा? कब होगा? When x equal to 0. जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एट पॉइंट B क्या है? x की वैल्यू क्या है? सेक्शन से 0 है. एट पॉइंट B when x equal to 0. You understand this? So when x equal to 0, so you will get the maximum slope. Therefore, so from equation second, therefore from equation second,
पुट x इक्वल टू 0, इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर दे। सो देयरफॉर ई आई टू डी वाई अपॉन डी एक्स मैक्सिमम, कहां पे मैं b के ऊपर निकाल रहा हूं। सो दिस इज इक्वल टू, जे टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ये टर्म क्या होगी आपकी, x इक्वल टू 0, बिकॉज वी आर टेकिंग x इक्वल टू 0। स्लोप इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट b और एट दिस पॉइंट a, बट आई एम हियर टेकिंग पॉइंट b। तो x इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट b, x इक्वल टू 0, तो इसलिए आपकी जो मैक्सिमम स्लोप होगी दैट इज इक्वल टू माइनस WL स्क्वायर minus WL square upon 16. So this is the maximum slope, or you can say dy upon dx maximum v is equal to minus WL square, EI को इधर ले जाइए, 16 EI, राइट। सो नेगेटिव साइन, जहां पे नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि जो आपका स्लोप है, और यू कैन सी जो टेंजेंट है, स्लोप के ऊपर जो टेंजेंट है, जो बीम AB के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है at point V. So the slope is negative here. The slope is negative here. So this is dy upon dx maximum. This is the formula. You have to remember this formula, that is minus WL square upon 16 EI. You understand this? Now come to the point. अब हमने मैक्सिमम स्लोप निकाल लिया, ये आप नोट कर लीजिए सारा। सो अब हम इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। So now to calculate the maximum deflection, हमें क्या निकालना है, अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। सो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, first we calculate the deflection at any section of the beam, right? We calculate the deflection. So deflection निकाल लो आप, deflection at any section of the beam. तो ये आपकी जो इक्वेशन सेकंड आई, तो इसे फर्दर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेट द इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे,
therefore EI बाहर रहने दीजिए dy upon dx, this is equal to integration of wx square by 4 minus wl square by 16, right? So this is, we will integrate this. So this is equal to, therefore EI dy upon dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, बाई दिस इज इक्वल टू, अब इसको करो आप, ये क्या बनेगा इसका, wx क्यूब बाई 12, राइट, wx क्यूब बाई 12 माइनस wl square by 16 into x plus C2. C2, this is the constant of integration, second constant of integration, because C1 we have used in case of the first integration. So this is C2. So again हमें क्या करना है, we have to calculate, we have to find the value of the integration constant C2. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द बाउंड्री कंडीशन, यूज बाउंड्री कंडीशन, कौन सी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे हम, जहां पे देखिए एट पॉइंट बी के ऊपर क्या है, जो आपकी डिफ्लेक्शन है वो क्या है, 0 है, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए इन द सिंपली सपोर्टेड बीम, इन द सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट ए मींस एट द एंड्स ऑफ द बीम द डिफ्लेक्शन इज 0. तो एट पॉइंट बी आपकी एक्स की क्या वैल्यू होगी, और यू कैन से एट एक्स इक्वल टू 0 बाई इज इक्वल टू 0, यू अंडरस्टैंड दिस, एट एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0, ये हम बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. तो x इक्वल टू 0, तो मैं दिस राइट साइड इज 0, x 0 है तो ये टर्म आपकी 0 हो गई, w इंटू 0 जो भी है ये आपका 0 हो गया, ये टर्म भी आपकी 0 हो गई, ये टर्म भी आपकी 0 हो गई, बचा C2. तो यू कैन से दैट C2 दिस इज इक्वल टू 0. तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो इसमें आई वो क्या थी, 0. सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी आपकी इसकी, 0. सो देयरफॉर अब इक्वेशन क्या आ गई, EI बाई इज इक्वल टू wx क्यूब ओवर 12 माइनस L square by 16 x plus 0 means 0. So this is the equation of the deflection at any section of the beam. जी आपकी आ गई equation of the deflection at any section of the beam. You understand this? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस तरीके से फाइंड करेंगे, so you can say we have to find out maximum deflection, right? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कहां पे होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई मैक्स, वी हैव टू फाइंड द
वैल्यू ऑफ वाई मैक्स, हमें वाई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कहां होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज एट द पॉइंट सी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां होगा, इज एट द पॉइंट सी। तो आप कह सकते हैं एट x इक्वल टू L/2, एट x इक्वल टू L/2, तो क्या होगा, देयर इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट। तो देयरफॉर EI बाई मैक्स, EIYX इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, W L/2 है, तो ये L/2 का होल क्यूब 12 माइनस WL² by 16 into L/2 into L/2. So this is equal to WL³ 96 minus WL³ by 32. This is equal to WL³ minus 3WL³ by 96, or you can say minus 2WL³ by 96, 48, right? Therefore, इधर लिख लेते हैं, इधर लिखिए, therefore y maximum is equal to, y maximum किसके बराबर होगा, ये आपकी इक्वेशन थी ना, ये चल रही थी EI बाई मैक्सिमम, राइट। तो बाई मैक्सिमम किसके बराबर होगा, माइनस WL³ अपॉन 40 EI. This is the maximum deflection in case of the simply supported beam. This is the maximum deflection in the simply supported beam, and minus sign shows that deflection that is in the negative side, that is in the downward direction, right. तो ये आपका, अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, और ये जो बाद में आपके ये फार्मूले ड्राइव किए हैं इनको आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको डायरेक्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, राइट। उस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट वेयर एवर in GATE or UPSC examinations where you are having a very less time, in that case, in simply supported beam, you can say that y maximum is equal to minus WL³ upon 48 EI. तो आपको क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू दिया होगा, W की वैल्यू दिया होगा, E यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होगा, तो I आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीम का। तो E बीम का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें और डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यू विल गेट द मैक्सिमम बाय मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। और इसी तरीके से यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम स्लोप आल्सो, इन दैट केस यू कैन यूज द डायरेक्ट वैल्यू। सो दिस इज द वे व्हेन यू आर हैविंग ए कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम, अदरवाइज this is the best way to solve the problems, because every concept, everything that is clear to you, जहां से आपको एक पूरी सिस्टम आपको क्लियर मिलेगा,
आपको पता चलेगा कि ये हमें फार्मूले कहाँ से मिले, हाउ वी हैव डिराइव दिस फार्मूला। ये फार्मूला अगर हमारे पास आया तो ये कहाँ से आया, किस तरीके से आया, और इसका जो बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक कंसेप्ट है, वो सारा आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हेन यू विल यू कैन से सॉल्व द क्वेश्चंस बाय दिस वे, राइट। तो उस तरीके से आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन करने का पूरा तरीका आपको क्लियर होगा। तो ये आ गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द बीम। अब इसमें एक लोड मैं और ले लेता हूं यूडीएल लोड के ऊपर। अगर आपका यूडीएल लोड होगा तो उसमें आपने क्या करना है कि सिर्फ आपका लोड डिफरेंट है, बाकी द एवरी मेथड इज सेम। सिर्फ अब जब आपने मूवमेंट फाइंड आउट करना है तो मूवमेंट उसका डिफरेंट आएगा और जो मेथड होगा वो सेम होगा, लेकिन आई विल ड्राइव दैट इक्वेशन, क्योंकि उसमें कुछ आपको ड्राइव करने के बाद मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फार्मूले मिलेंगे। बाउंड्री कंडीशंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ आपको एंड में उस केस में आपकी मैक्सिमम स्लोप क्या होगी, उस केस में आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी व्हेन ए यूडीएल लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ आ गया। इसमें देखिए, इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस आप इस्तेमाल करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन जो इस्तेमाल होगी, अगर हम एंड्स की बात करें एट एंड ए और एंड बी, तो जहां पे क्या होगा, एट एंड ए आपका डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एट एंड ए डिफ्लेक्शन आपका जीरो होगा। और अगर हम मिडिल पॉइंट की बात करें तो जहां पे आपका स्लोप जीरो होगा। लेकिन एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी यू कैन से आपका क्या होगा, स्लोप आपका मैक्सिमम होगा। और एट पॉइंट सी जहां पे आपका स्लोप जीरो था, वहां पे आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में, कि एंड्स के ऊपर हमें क्या मिलेगा और सेंटर में हमें क्या मिलेगा, वही बाउंड्री कंडीशंस आपने इस्तेमाल करनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, राइट। तो अब देखिए सेकंड हम करते हैं। अच्छा, दूसरा हम इसमें करेंगे simply supported beam with UDL, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, राइट। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। तो पहले हम बीम बना लेते हैं। कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड है, राइट। सो वी हैव कंसिडर्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ UDL, suppose the length of the beam is the length of so this is beam, so this point is मैं A ले लेता हूं
and this point is B. So the load is W per unit length, W per unit length, right? The load is W per unit length. तो अगर जो लेंथ है इसकी आप ले लीजिए, लेंथ जो बीम की है, सो बीम की लेंथ आपकी कितनी है? L. L is the length of the beam, right? तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, बिकॉज दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो रिएक्शन फोर्स एक RA में होगी और एक आपकी रिएक्शन फोर्स RB में होगी, मीन्स टू रिएक्शन फोर्स RA एंड RB. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्शन फोर्सेस हमें फाइंड करना है, मीन्स RA फाइंड आउट करना है और RA एंड RB को फाइंड आउट करना है. सो देखिए, पहले आप क्या कीजिए, इसको फाइंड आउट करने में सिग्मा MB मूवमेंट एट पॉइंट B आप क्या करो, 0 ले लो. सिग्मा MB इक्वल टू 0, तो क्या आएगा आपका ये RA इंटू L RA इंटू L माइनस W इंटू L RA इंटू L इंटू L/2, दिस इज इक्वल टू 0, राइट. W इंटू L क्या होगा? टोटल लोड होगा, और जो टोटल लोड है ये कहां पे एक्ट करता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम में, सेंटर में. तो मैं कहता हूं ये जो सेंटर में एक्ट करेगा लोड, जहां से जहां तक डिस्टेंस इसका कितना होगा? L/2. और इसी तरीके से जहां तक डिस्टेंस भी इसका कितना होगा? L/2, राइट. तो मूवमेंट क्या आया? WL, दिस इज द टोटल लोड, एंड द टोटल लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, सेंटर में जो कहते हैं ये पॉइंट इज C, इज एक्टिंग एट द पॉइंट C, है ना. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट विल एक्ट ऑन द सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड इसका कहां पे होगा? हाफ लेंथ ऑफ द बीम, दैट इज L/2. तो मैं मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर ले रहा हूं, तो WL/2 दैट इज द टोटल लोड, and this is acting at this point, at point C. So distance from here to here, this is L/2, so this is equal to 0. You understand? This load is acting upward. I have taken positive. Movement इसका क्या होगा? Clockwise, left side से clockwise positive, and this load is acting downward. तो इसका movement होगा anti-clockwise. So I have taken negative sign here. तो आप कह सकते हैं RA into L, this is equal to WL square by 2. ये कैंसिल हो गया, therefore RA WL/2. तो RA की वैल्यू आ गई आपकी WL/2. अब हमने RB भी निकालना है. सो फॉर कैलकुलेटिंग द RB हम क्या करेंगे? वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू 0. सो वी विल टेक सिग्मा Fy, दिस इज इक्वल टू 0. सिग्मा Fy दिस इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा आपका RA प्लस RB, और ये जो लोड है W इंटू L, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, माइनस WL, दिस इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड दिस? तो RA अपने कैलकुलेट किया है WL/2 प्लस RB माइनस WL, दिस इज इक्वल टू 0.
तो सिंप्लीफाई कर लो आप, तो आर बी की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, WL/2। तो आपका आर बी भी, यू कैलकुलेट दैट, सो आर बी आपका आएगा, देयरफॉर आर बी दिस इज आल्सो इक्वल टू द सेम WL/2। तो आर ए और आर वी जो रिएक्शन फोर्सेस थी, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। तो सब हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने क्या किया, रिएक्शन फोर्सेस को हमने कैलकुलेट कर लिया। यू अंडरस्टैंड दिस? वी हैव कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्सेस, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। नाउ अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्लोप and the maximum deflection. Same procedure, rest everything is same procedure we have to follow. हमें ये अपना भी रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो हमारा जो इक्वेशंस होता था डबल इंटीग्रेशन मेथड में, वो क्या है, EI d²y/dx², दिस इज इक्वल टू m। This is the equation in double integration method. This is the equation. अब इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, कि हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करें, एक सेक्शन ले लीजिए, जहां पे ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन का जो डिस्टेंस है एट पॉइंट V से, वो कितना है, x, राइट। हमने एक सेक्शन ले ली xx, जिसका डिस्टेंस पॉइंट B क्या था, ये। अब हमें मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर निकालिए। व्हाट इज द मूवमेंट एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट के ऊपर क्या मूवमेंट होगा इसका, पहले आ जाइए इसमें, आर ए तो मूवमेंट एट द सेक्शन XX, पहले तो हमें इसका क्या चाहिए, मूवमेंट निकालना है। दिस इज RB, दिस रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, तो क्या होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज, एंड फ्रॉम द राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव। सो दिस इज आप कर लेते RB into X, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट एट दिस पॉइंट। अब देखिए लोड इसमें जो होगा, लोड इसमें क्या होगा, व्हाट इज द लोड हियर, सॉरी, आई हैव जस्ट पुट द डायरेक्शन रॉन्ग हियर, ये सारी डायरेक्शन नीचे आएगी भाई, बिकॉज दिस लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। राइट तो इसमें क्या होगा, जहां से लेकर जहां तक लोड कितना होगा, -W into X। माइनस साइन इसलिए लिया बिकॉज दिस लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। एंड ये जो मूवमेंट क्रिएट करेगा, जो मूवमेंट इसमें क्रिएट करेगा, वो कौन सा मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज का होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है राइट साइड से, दैट इज नेगेटिव। सो -W into X। अब ये लोड कहां पे एक्ट करेगा, वेयर इट इज एक्टिंग, इट इज एक्टिंग एट द मिडल ऑफ द X, राइट, बिकॉज दिस इज यूडियल लोड। और अगर जाओ जहां तक डिस्टेंस इसका X है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये लोड एक्ट करेगा, मींस एट x/2, डिस्टेंस क्या होगा, x/2 के ऊपर। तो मूवमेंट क्या आएगा, जहां से W into X, जहां ये लोड हो गया, and the distance is x/2, that is x/2, right, therefore आप क्या करें, RB की वैल्यू आप पुट कर लो। RB क्या है आपका, RB है WL/2 into X
minus W x square by 2. So this is the value of movement. ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? मूवमेंट की वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट. राइट. अब क्या करें? नाउ यूज दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को यूज करें तो इसमें ये वैल्यू भर ले आप. तो क्या आ गई? देयरफॉर ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2. राइट. यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को क्या करना है? इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. अब इसको इक्वेशन को क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट ई आई आपका बाहर आ गया, और जब हमने इंटीग्रेट किया डायरेक्ट स्टेप ले ले तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप, फर्स्ट स्टेप हियर. डायरेक्ट मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं. डब्ल्यू एल बाई 2, तो जे इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2. राइट. माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1. Right. So this is your, you can say this is your equation number second. ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आई. डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको और सिंप्लीफाई करना है कर लीजिए. तो ये आपका आ गया डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 plus C1, right? So this is the equation of the slope. This is the equation of the slope. But this is the C1. Again, this C1 क्या है? That is the integration constant. तो इसकी वैल्यू हमें, we have to calculate the value of C1. तो C1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए we have to use the boundary conditions, right? बाउंड्री कंडीशन सेम होगी. So to calculate C1, use the boundary condition. आप क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशन आप इस्तेमाल करेंगे. तो इसमें बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? सेम है. एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2. अगर एक्स आपका एल बाई 2 है तो जैसे वो मैंने आपको बताया था, तो एल बाई 2 के ऊपर जो आपकी स्लोप होगी वो डी वाई पॉन डी एक्स. सेम मेथड है. मैंने कहा था स्लोप आपका जहां पे क्या होगा, अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दिस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल टू दिस. सो यू कैन से एट दिस पॉइंट सी मींस एट द पॉइंट एल बाई 2 ऑफ द बीम, जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा? 0 होगा. एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. सेम प्रोसीजर यू हैव टू अडॉप्ट हियर. यू कैन सी द अदर डायग्राम जो मैंने इससे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने जब पॉइंट लोड लिया था सेंटर में, तो उसमें जो भी ये डायग्राम ड्रा करके तो आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट में जो स्लोप होगी आपकी 0 होगी. व्हेन यू विल ड्रा द टेंजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ द curve, elastic curve, you will see that that tangent is a straight line, horizontal line. So you can say that in the simply supported beam, whether it is a point load or whether it is a UDL load, your slope is 0 at is equal to XL by 2, means half length of the beam. जो slope होगा उसका वो क्या होगा? 0 होगा.
तो एट एक्स इक्वल टू एल वाई टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप इक्वेशन सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट करें 0, दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एल वाई टू, तो ये आएगा डब्ल्यू एल वाई 4, तो एल वाई टू क्या होगा इंटू एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई 4, राइट, एल बाई 2 का होल स्क्वायर, डब्ल्यू एल बाई 4, एक्स की जगह में एल बाई 2 पुट किया, तो एल स्क्वायर बाई 4 प्लस डब्ल्यू वाई 6, तो ये हो गया, और इसकी जगह आप पुट करो एल क्यू by 8. This is minus. This equation is minus. Sorry, this equation, right? तो आपका सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, जाए डब्ल्यू एल क्यू वाई 16 माइनस डब्ल्यू एल क्यू 48, राइट। So this is equal to 3WLQ minus WLQ upon 48, or this is equal to 2WLQ upon 48, and this is equal to WLQ upon 48, right? So ये सारी वैल्यू क्या थी किसकी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, राइट। ये एक्स इक्वल टू एल वाई 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये प्लस C1 भी तो है, C1 मैंने लिया ही नहीं, ये प्लस C1 भी तो चल रहा था यहाँ पे, प्लस C1 प्लस C1 प्लस C1, राइट। तो C1 कितना आ गया आपका, व्हाट इज योर C1, 24, therefore C1 is equal to minus WLQ upon 24, तो जो C1 की वैल्यू आपकी आ गई माइनस WLQ अपॉन 24, राइट। तो अब C1 की वैल्यू, ये जो इक्वेशंस थी आपकी, ये वाली इक्वेशन, इससे मैं ये अगर मैं लिखता हूँ, ये इक्वेशन थर्ड है, तो बाकी तो मिटा दूंगा मैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो C1 की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन को दोबारा साफ करके लिख लेते हैं हम, तो आपकी आई E1 EI dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू WL x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस W x क्यूब अपॉन 6 प्लस C1, यही इक्वेशन थी, इसको मिटा दें,
तो जब बाउंड्री कंडीशन मैंने यूज किया एट x इक्वल टू L/2, तो मैं C1 की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू L/2 आप कह सकते हैं एट x इक्वल टू L/2, एट x इक्वल टू L/2, तो मुझे क्या आएगा आपका, देयरफॉर EI dy अपॉन dx जा गया WL/4 L/2, तो x की जो L/2 है तो ये आ गया L²/4, राइट, प्लस WL³ अपॉन 48 प्लस C1 क्या है, दैट इज माइनस है, तो माइनस WL³ अपॉन 24, राइट। Yes. So therefore EI dy upon dx, this is WL³ upon 16 plus WL³ upon 48 minus WL³ upon 24। तो इसको सॉल्व करो, इसकी जरूरत नहीं थी करने की, ये तो बाउंड्री कंडीशन ले ली थी मैंने। इसमें सिर्फ C1 की वैल्यू पुट करो आप, जो आपका आ गया EI, वो जो पीछे पार्ट किया था उसे रहने दीजिए आप, दिस इज इक्वल टू WL(x² अपॉन 4 प्लस WX³ अपॉन 6 प्लस C1 क्या था, ये माइनस WL³ अपॉन 24, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन, सपोज करो मैं इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूं, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, y max, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y max कहां पे होगी, एट not deflection, we have to find out the maximum slope, not deflection, we have to find out the maximum slope, that is dy upon dx, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्लोप आपकी स्पॉट एंड के ऊपर होगी एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, तो मैक्सिमम स्लोप आपकी थीटा ए मैक्सिमम एंड थीटा बी मैक्सिमम। सो हियर आई एम टेकिंग द सेक्शन एक्स फ्रॉम द पॉइंट बी, तो मैक्सिमम स्लोप एट द पॉइंट बी क्या होगी, एट मैक्सिमम स्लोप एट पॉइंट बी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम स्लोप आपकी पॉइंट बी के ऊपर है, तो मीन्स कब होगी, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू आपकी 0 होगी, मीन्स वी हैव टेकन द x डिस्टेंस, दिस सेक्शन इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एंड a। और ये जो इक्वेशन थी आपकी,
ये आपकी स्लोप की इक्वेशन थी एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, ये थी एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप. But we have to find out the maximum slope, and maximum slope that I have told you that in case of the simply supported beam, maximum slope is either at the point A or at the point B, means at the ends of the beam or the supported end of the beam. जहां पे होगी, so I am just taking it from the point B because I have taken the section X from the point B, right? That is at a distance of X from the point B. तो इसको करने के लिए हमें, मैं कहता हूं पॉइंट बी के ऊपर आपकी स्लोप मैक्सिमम है, देन व्हाट इज देयर, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0. तो वैल्यू जो एक्स की है वो 0 के बराबर है. तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए. सो ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू, ये आपकी टर्म 0 हो जाएगी, दिस टर्म इज 0, this term is 0 and this term is there, WL cube upon 24, right? So you can say ये आपका relation आ गया, therefore dy upon dx maximum is equal to minus WL cube upon 24. Again मैंने आपको बताया नेगेटिव साइन इज व्हाई इट इज देयर, द टेंजेंट विच इज मेकिंग एन एंगल विद द लॉस्टिक कर्व, दैट एंगल दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द पॉइंट V. और जब ये राइट साइड के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, वी आर टेकिंग द नेगेटिव साइन. और सिमिलरली मैक्सिमम स्लोप एट A वो क्या होगा, प्लस, ये अगर नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो एट dy by dx ये आपका पॉइंट V था, तो सिमिलरली एट द पॉइंट A you are the maximum slope that is equal to WL cube divided by 24, right? EI, yes, EI भी तो लिखना है, that is EI, right? You understand this? तो ये आपका मैक्सिमम स्लोप का फार्मूला यू हैव राइट इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन द यूडियल लोड इज एक्टिंग ऑन दैट. अब इसका हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें कैसे फाइंड आउट करना है, दैट वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3. जो आपने स्लोप का इक्वेशन निकाला, C1 की वैल्यू भी मैंने निकाल के जहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया. अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, दोबारा इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 3. इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करो तो क्या है आपका ई आई इंटू बाई, दिस इज इक्वल टू, कर लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यू एक्स क्यू बाई 12 प्लस डब्ल्यू एक्स 4 बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 24 प्लस माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 24 इंटू एक्स प्लस C2. दिस इज द इंटीग्रेशन. ठीक है, डब्ल्यू एल एक्स क्यू बाई 12 प्लस WX4 by 24 minus WL cube by 24 into X
plus C2, this is the second constant of integration. अब हमें क्या निकालना है? What we have to find out? We have to find the value of y maximum, right? हमें क्या निकालना है? y maximum की वैल्यू निकालनी है। और जैसे मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में बताया, जहां पे आपका स्लोप सेंटर पॉइंट के ऊपर 0 होगा, वहां पे जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये याद रखना है आपने। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। मींस एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सिमेट्रिकल टाइप यू कैन से, तो आपका जो y मैक्सिमम होगा वो कहां पे होगा? व्हेन वी विल टेक द वैल्यू ऑफ, देखो हमने ये वैल्यू ली थी x की एट दिस सेक्शन, तो अगर मैं x को कहूं कि x इज इक्वल टू L/2, अगर मैं x की वैल्यू L/2 लेता हूं तो y आपका क्या होगा? y मैक्सिमम होगा। L/2 क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द बीम मींस एट द पॉइंट C। इफ L इज द लेंथ ऑफ द बीम, तो x इज इक्वल टू L/2 एट द सेंटर ऑफ दिस, राइट? So this boundary condition we will use. So this is the boundary condition. ये आपकी क्या है? बाउंड्री कंडीशन हम यूज करेंगे। x इज इक्वल टू L/2 फॉर y मैक्सिमम, राइट? अब y मैक्सिमम के लिए तो आप क्या करें? पुट करो वैल्यू x इक्वल टू L/2, ये आ गया W L/12 into L/2 L3/8, राइट? दिस इज x क्यूब है ना, x की जगह L/2 क्या आ गया, प्लस WY24 into L4 into 16 minus WL3/24 into L/2 so this is not चेप मैंने, हाँ यस, मैंने ली थी कंडीशन ये एट x इक्वल टू L/2, y इज इक्वल टू x अगर आपका L/2 होगा, x आपका L नॉट L/2, पहले तो हमें ये C1 की वैल्यू निकालनी थी। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ये कंडीशन लेंगे। एट x इक्वल टू 0 योर y इज 0, डिफ्लेक्शन इज 0, राइट? ये मिटा दीजिए, ये रॉन्ग कर दिए मैंने। एट x, बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C2, आई एम यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। कौन सी? ये बाउंड्री कंडीशन मैंने यूज किया, बाउंड्री कंडीशन at x equal to 0, y is equal to 0, deflection is 0 because the deflection is 0 at the ends, at the end A and B। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू 0, जे आपका 0 हो जाएगा, जे भी आपका 0 हो जाएगा, जे भी आपका 0 हो जाएगा, और C2 भी आपका क्या होगा? therefore the value of C2 is 0। जो C2 की वैल्यू है वो क्या होगी? आपकी 0 आ जाएगी। तो अब हमारी डिफ्लेक्शन की कौन सी इक्वेशन बनी, इसको हम लिखते हैं। So the equation of the deflection is
the equation is W into L x क्यूब y 12, आगे बोलिए, ये मैंने मिटा दिए सारा, माइनस डब्ल्यू एक्स वाई 4 माइनस डब्ल्यू एक्स वाई 4 अपॉन 24 माइनस डब्ल्यू एक्स वाई 4 अपॉन एक्स नॉर्मल डब्ल्यू एक्स, and third one is minus WLQY24 into X. वो मेरी इक्वेशन मिट गई थी, मैं इसको दोबारा लिखूंगा। देयरफॉर इसको मैं क्या किया, दोबारा इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिल गया, ई आई इंटू वाई दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डब्ल्यू एक्स 4 बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 इंटू एक्स, और C2 की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किया, C2 की वैल्यू आपकी जाती थी 0 थी, राइट। C2 की जगह मैं 0 पुट कर लिए, मैं अब दोबारा इसको नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टेकन दिस कंडीशन एट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ C2, बट आई फॉरगेट टू रिटेन द इक्वेशन हियर, सो मुझे दोबारा ये थोड़ा सा लिखना पड़ा। तो ये आपका इक्वेशन आ गई, ई आई बाई इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इधर लिख दीजिए, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपकी कहां पे होगी, बाई मैक्स कहां पे मिलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू एल बाई 2, जब आपकी l की वैल्यू, x की वैल्यू l बाई 2 होगी, बिकॉज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिस इज एट द सेंटर, व्हेन x is equal to l by 2 you will get the maximum deflection. So substitute here for calculating the maximum deflection, so therefore ei y max this is equal to w l square by 4 into l by 2 है, so that is l cube 24, right। L by 2 का क्यूब क्या होगा, ये x क्यूब बाई 3 है, तो L by 2 ये 24, यू अंडरस्टैंड दिस, माइनस W by 24 L by 2 L4 and that is 16, right, that is 16 and minus W L cube by 24 into L by 2, right, this is, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
Oh, actually this equation I'm wrong. This is WL/4 into x square. ये गलत कर दिया. Minus WX/Q minus 6. This one. Yes. ये जहाँ पे ये रहेगा. Right. So this is now ये आपका आ गया WL/4 96 minus WL/4 16 cos ratio 384 minus WL/4 upon 48, राइट. तो आप इसे सॉल्व कर लो. So this is equal to, जो सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, सो 384 इसका एलसीएम आ जाएगा. एक्चुअली एलसीएम 384, तो जे आपका आ जाएगा 4, जे आपका 4 जहां पे लिख लेते हैं हम इसको. 384 एलसीएम आया, तो देयरफॉर ये कर लीजिए EI बाई मैक्स दिस इज इक्वल टू 4WL4 minus WL4 and 48. Minus 8 WL4 divided by 384, right? Therefore, EI by max, the EI by max, this is equal to minus 5 WL4 by 384, right? So EI by max, this is equal to minus WL/4 so therefore by max in case of UDL, in case of the simply supported beam, when the UDL load is acting, in that case कितना आएगा minus 5 WL4, this is equal to 384 into EI, right? So this is by equation of the deflection, maximum deflection of the beam, maximum deflection of the simply supported beam when the UDL load is acting, right? So here you have seen that the double integration method, और डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम जो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं वही कर सकते हैं जहां पे एक सिंगल पॉइंट लोड आपका एक्ट करता है. ये पॉइंट याद रखिए, सिंगल लोड जहां पे एक्ट करेगा, वेदर इट इज अ पॉइंट लोड, वेदर इट इज अ UDL, तो सिंगल लोड एक्ट करेगा. बट इन केस ऑफ when the two loads are acting here, suppose one load is acting there and one load is acting there, in that case if we will use the double integration method, तो हमें क्या होगा कि हमें उसको यूज करने में, that is a very lengthy type of problem. We can calculate the problem, but that is a bit lengthy problem. So in that case we use the Macaulay's method. Macaulay's method जो है that is very important method, और उसमें आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैकॉलेस मेथड के ऊपर होगा,
और मैकॉलेज मेथड हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी डोंट यूज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो ये सारा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन इसकी दूंगा। आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट हियर, जस्ट आई हैव गिवन द हिंट ऑफ that we cannot, there are certain problems when two loads are acting there, are there the two sections, when two loads or three loads are acting on the beam, at that point if we will use the double integration method, that will take, or you can say that is a very lengthy type of problem। और कल मैं इसको पहले आपको इसका बताऊंगा कि रीजन क्या है why we don't use the double integration method। लेकिन जो मैकॉलेज मेथड है, अब पॉइंट ये होगा कि आप कहेंगे कि इसमें आप अगर इसमें सिर्फ आप सिंपल टाइप की प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो व्हाई यू हैव जस्ट गिवन द 3 लेक्चर्स ऑन द डबल इंटीग्रेशन मेथड। रीजन इज बिकॉज द मैकॉलेज मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द डबल इंटीग्रेशन मेथड, वो डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर ही बेस है। सो डबल इंटीग्रेशन मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द बेस ऑफ द मैकॉलेज मेथड। और इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट बीम के ऊपर डिफरेंट टाइप का लोड जो है, और उसमें मैंने आपको ओवरहैंग बीम का दिया और आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो इस किस्म की जो बीम है वहां पे हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके हम भी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एंड टुमारो माय लेक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन आल्सो, दैट इज द मैकॉलेज मेथड। So be attentive and come tomorrow and you can say watch my lectures, I will deliver that, right? Thank you very much.